Hi everyone, this is Sujata here. Welcome to Sujata's Art Challenge. Use quantity time in a quality way, as we all are stuck in a lockdown mode and waiting for Corona to quit world so that we all get back to our normal life. I'm sure we all will soon overcome this COVID-19 and things will bounce back to normal. As soon as things normalize, students are the first one to join their most awaited second home, and that is their school, to a new session with their new books, notebooks, new pencils, pens, bag, etc. So today's video is on back to school theme. In this video, I am going to share ideas and tips on making the books, notebooks, cover, the brown cover which you do on your books, new books, to make them beautiful, attractive, innovative, and at the same time an interesting one. So let's start. See, this is my English notebook, and small detailings I have done to make it more beautiful and attractive. See the name, I have used punctuation marks, the question marks, exclamation marks, and other names. Sujata Bilwarier. You can write like this. And homework, for homework you can make homework like this. And for making it more interesting, I have written some quotation here, like success is a journey, not a destination. So you can search for more quotations and you can write and beautify this. This I have done with white gel pen. You get to Faber-Castell also, like this. You can do from here. Small detailings will make your book look more beautiful. Small white gel pen you can use, glitter pen you can use, any gel pen, other color also you can use to make it more beautiful and attractive. And do write small quotations to make it interesting one. The teacher when picks it up for correction and all, so you'll enjoy reading these things. So this is how you can do with this is the mandala work, doodlings and tangles. These things you can do to make it more interesting. So use any sketch pen also you can use. You can use gel pens, glitter pens. So small detailing, not much is needed, just small detailings, and it will look beautiful. So for next you can see maths, my maths notebook. See, again symbols of maths I have used here, equal to and all. See, square root maths classwork, and then I have written a quotation here also. Dear maths, please grow up and solve your own problems. I am tired of solving them for you. One more I have written. You can write 1, 2, small quotation, not big one. If 50 plus 50 is 100, then practice plus hard work is equal to success. Small detailing I have done with the numbers here. Okay, here you can see I have written maths classwork. Try to solve me. Okay, I have done here also on the binding side also, so that when you keep your books in your bag also, or on the bookshelf, you can just take it out. If you want maths, you can take the maths out. If you want English, you can take out the English out. So you don't have to सारे books को एक करके उठा के देख रहे हैं कहाँ है. Here also you can, and here also English at a glance. Anyone who sees, oh, can be interesting for them also, for others also. So this is how. So this is your maths you can do. Okay, more symbols of maths you can use these things, brackets, infinity,
and all. Okay, this is the mass symbol. In English language also, for English, these are the marks you can use, and also you can write lots of quotation are there, and the language is the light of mind. This type of quotations you can write. So one more is there. This is my Hindi notebook. So small things I have written here. Hindi भारतीय संस्कृति की आत्मा है, and then here also small quotation is मेहनत हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है. I have written punctuation marks also in Hindi I have used, and see small detailing with Wali art I have done here. So छोटा छोटा detailing these, it will become more interesting for anyone, for you also, and it will make it beautiful also, attractive also. Okay, so this type of things you can do. और इसको और इन्हांस करने के लिए लाइक आप इस तरह के स्माइलीज बना लीजिए, छोटे छोटे स्माइलीज, एंड यू कैन पेस्ट इट हियर. तो ये और सुंदर लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा. यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, विल बिकम ब्यूटीफुल, है ना. तो ऐसा ग्लू लिया एंड here you can paste. देखिए मैथ्स ऑल्सो, ये स्माइली, दिस इज अ बॉय विथ अ कैप, यहाँ पे लगा सकते हैं, बिकॉज दिस कोटेशन इज लिटिल हिलेरियस, थोड़ा हंसने वाला है ना. डियर मैथ्स प्लीज ग्रो अप एंड सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम, आई एम टायर्ड ऑफ सॉल्विंग देम फॉर यू. आप इसको थोड़ा हंसने वाला फेस लगा दीजिए यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा. ठीक है. एक और है आपका ईवीएस. ईवीएस सब्जेक्ट को देखो मैंने किया डिटेलिंग, कितना इंटरेस्टिंग बना दिया है इसको. दीज आर द सिंबल ऑफ ईवीएस. ये सब सिंबल्स जो होते हैं ईवीएस में यूज होते हैं. फॉर ट्रीज यू ड्रॉ दिस, फॉर हॉस्पिटल, पार्क, हाउस, बस स्टॉप. सो दीज आर द सिंबल. हम सिंपली नेम क्लास सब्जेक्ट नहीं लिख के वी कैन यूज शेप, गिव सम शेप ऑफ सिंबल्स ऑफ ईवीएस एंड देन राइट दिस. आई मेक प्लैनेट ऑल्सो, सैटर्न, और भी प्लैनेट्स है, कोई भी प्लैनेट्स बना लो आप. यहाँ पे एक रॉकेट बना दिया छोटा सा, यहाँ देखो छोटा सा एक मैंने ईवीएस से रिलेटेड एक पोस्टर जैसा कर दिया मैंने. स्टे होम, स्टे सेफ, अभी कोरोना के लिए दिस इज वेरी रेलेवेंट. सो एंड सेव मी द अर्थ इज सेइंग, एंड देन दिस इज वेरी कॉमन फॉर यू ऑल, रीयूज, रीड्यूस एंड रिसाइकल. स्मॉल एक बॉय बना दिया है विद अ टेलीस्कोप, ही इज वॉचिंग the whole world, the universe. So this is how you can make it interesting. This is your EVS. और इसको कोई स्माइली फेस लगाना है तो you can write here, और भी ब्राइट हो जाता है. दिस स्माइलीज जस्ट इमोजीज लगा दीजिए तो ये बहुत ब्राइटन अप हो जाता है. You can put these smileys like this. अब जैसे कंप्यूटर के लिए मैंने रखा है ये तो मैंने ड्रॉ करा था, ये सब ड्रॉ किया मैंने पे और राइटिंग की है. फॉर कंप्यूटर विल डू समथिंग न्यू. I have drawn a computer here on a simple paper sheet, and highlighter से इसको color कर दिया. And these are the cutouts, magazines से, old books also you can take. इसकी cutouts निकाल के, and then I am going to, चलिए बताती हूँ आपको करके दिखाती हूँ. छोटे छोटे आप old books या तो किसी को हेल्प कर दीजिए, दे दीजिए. अगर इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज देन प्लीज़ उसमें से कटआउट्स, इम्पॉर्टेंट कटआउट्स उसके लिए रखिए. आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं. देन दिस इज़ माय कीबोर्ड, छोटा सा कीबोर्ड बनाया है. एंड कीबोर्ड पे आई हैव रिटन हियर, स्कैन योर प्रॉब्लम, डाउनलोड सॉल्यूशन.
छोटा सा कोटेशन दे दो तो it will become very interesting. This is how paste कर दिया. Then one mouse is also there. ये मैंने करेक्शन पेन से या वाइट पेन जेल पेन से या ब्लैक मार्कर परमानेंट मार्कर होते हैं उनसे इसका मैं दिस वायर्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. So this is done. A nice one, simple can be. This I love this smileys emojis. ये emojis बहुत मजेदार होते, कहीं भी लगा दो. It will make it very attractive. Simple way you can just make your book more beautiful and interesting. Also, there is something to read also, and it looks beautiful. So this is how you can make a simple brown cover of your notebook, your book, interesting. So this is how you can make a simple brown cover, beautiful, attractive and interesting. So keep your imagination flying in the sky of creativity and color your own world of art and craft. Be indoor, be safe. Bye. See you all.